हेलो हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जो लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं एक बार अपने दोस्तों को बता दो दैट वी आर स्टार्टिंग विद द मीट। ओके, एंड एक बार कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता दीजिए कि इज माय वॉइस ऑडिबल एंड ऑल। ओके, देन वी आर गोना स्टार्ट। ओके गाइस, सो वी शुड स्टार्ट नाउ। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट, myself Devardhan Singh, I'm in third year electronics and communication department. Just now what we are making is we are going forward with the event MakerNova 3.0. Okay, so Ved, can you please start the PPT? So for starting with MakerNova, let's talk something about Drishti, about the club. Okay, how it got there. Hello, SVNIT. Hello everyone. So Drishti is a technical club of SVNIT which was फर्स्ट ऑफ established ऑल in एक बार 2002. जो So लोग from ज्वाइन नहीं हुए हैं 2002 एक बार to अपने दोस्तों को बता दो दैट वी आर 2025, स्टार्टिंग विद it's द मीट। more than ओके, 23 years. एंड एक बार Okay, कमेंट सेक्शन में भी आप and लोग बता दीजिए कि heading इज माय towards वॉइस ऑडिबल एंड ऑल। ओके, देन वी आर गोना स्टार्ट। heading towards that, with that we have shared what we have learned through the experience. For example, it's like in legacy guys. जो 2022 के हमारे सीनियर्स थे उन लोगों ने आगे पहुंचान करी टू देयर जूनियर्स, देन फ्रॉम देम सीनियर्स एज टू देयर जूनियर्स एंड ऑल दैट, एंड नाउ ओके that गाइस, is what we सो are doing. Okay, we वी are शुड स्टार्ट sharing नाउ। our experience ठीक है, with you मूविंग guys. फॉरवर्ड We are टुवर्ड्स द conducting many workshops, seminars, myself events, Devardhan Singh, and on I'm in third year implementation of different electronics and projects communication which will department. be helping you Just out. now what we are Okay, making is we are we're going gonna forward with aim the to event nurture MakerNova the technical 3.0. skills, enhancing Okay, the social so Ved, can quantity you please start by the providing a PPT? real-time opportunity to work as a team. Okay, so if you're thinking that you're gonna only work in a on the technical So for stuff, starting so with ऐसा नहीं है. MakerNova, You're gonna let's talk work something with the about team Drishti. also, Okay, about तुम्हें the एक समझ club. आएगा कि कैसे Okay, अपन how लोग it टीम में got काम करते हैं, तो वो there. अपने लिए Hello, कैसे hello अपन everyone. बॉन्डिंग So बढ़ा Drishti सकते is हैं a technical टीम club के of अंदर। तो SVNIT which was फर्स्ट ऑफ established ऑल in एक बार 2002. जो लोग So ज्वाइन from नहीं हुए हैं एक 2002 बार to अपने दोस्तों को बता दो दैट वी आर 2025, स्टार्टिंग विद it's द मीट। more than ओके, 23 years. एंड एक बार Okay, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग and बता दीजिए कि with heading इज माय वॉइस towards ऑडिबल एंड ऑल। ओके, देन वी आर गोना स्टार्ट। heading towards that, with that we have shared what we have learned through the experience. For Am I example, audible? it's like in legacy guys. जो 2022 के हमारे सीनियर्स थे उन लोगों ने आगे पहुंचान करी टू देयर जूनियर्स, देन फ्रॉम देम सीनियर्स एज टू देयर जूनियर्स एंड ऑल दैट, एंड नाउ Okay, that guys. is what we So are doing. Okay, सॉरी गाइस, बीच में एक डिस्टरबेंस था, बट नाउ लेट्स हेड फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। वेद, कैन यू गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड? या, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर अचीवमेंट गाइस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे रोवर, ड्रोन, many other projects, bot, CAD models. So it's all related to mechanical, chemical, civil, AI and electronics, none other than this. So मैं तुमको एक चीज बताऊं ना, what we are going to it's कि it's not a competition where we are focusing only at a state level or at a inter college level. ठीक है, we have participated in many of the national competitions, in the international competitions also. Okay, you can just go through the history where we have beaten many of the IIT college, many of the private colleges in our projects. Okay, so we have done so best in our projects. We have, and it's all about the experience which we got from our senior and which we'll be going to forward it to you. Okay, so as you can see, you can identify easily. One is that CAD model. Okay, for the mechanical branch. Then we have civil related projects also. We have a rover
where all the integration of the manufacturing infrastructure with that integration of the lower control circuital diagram, all is integrated towards there. Okay. Ved, can you please go forward? Okay, so now when you have to become a part of Drishti, okay, now it's come कि how we can be a part of Drishti and how we can be a part of this legacy. कैसे हम लोग वो international competitions के अंदर focus कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसका एक part बन सकते हैं. तो guys देखो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज बताऊँ ना, how Drishti is being different from other clubs and how it is being different from other technical events. यहाँ पे जो ग्रुप बनेंगे या फिर जो भी तुम लोगों का एक किसी भी प्रोजेक्ट पे तुम लोग काम करोगे, सो इट्स नॉट लाइक कि तुम 4-5 जने हो, यू आर 4 to 5 स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ओवर अ प्रोजेक्ट. इट्स अबाउट मोर देन it's about a group of plus 10 to 15 peoples who are working over a project. Okay, so अगर तुम्हें इस we have so many participations, so अगर उसमें तुम्हें head stand करना है, तुम्हें ऐसे आगे आना है and you have to prove yourself. So for that we'll be going through some of the interview rounds for your selection in Drishti. And I'll tell you, please mark my words, that this is the very last chance to be a part of Drishti. Okay, these interviews will go on. MakerNova is the only and the last chance where we will be recruiting you as a junior in Drishti Club. Okay, so it's a very great opportunity. You'll be working over the tech side also, and you will be working over the social stuff also. Okay, like bonding with your teammates and everything. Now here comes one thing कि जब when you are working over a project, हर किसी का एक अलग अलग डोमेन होता है, हर किसी का एक अलग अलग इंटरेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी को मैकेनिकल साइड इंटरेस्ट है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक साइड इंटरेस्ट है. बट टुडे आफ्टर द एंड ऑफ द मीड यू विल गोना नो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बस ऐसा नहीं है कि यार हाँ मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है. वी हैव डिफरेंट थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो. इंटरनेट ऑफ थिंग, देन वन इज सर्किटल डिजाइनिंग, व्हेन यू आर मेकिंग अ बॉट. एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉट, देन उसके बाद हो गया कि तुम लोग बॉट के अंदर एक लोअर कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी कौन सी ड्राइव होनी चाहिए, कैसे वो मूवमेंट होना चाहिए, वो सब लोअर कंट्रोल में आता है. कौन सा माइक्रो कंट्रोलर तुमको यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वाईफाई, देन फॉर द ESP32 एंड ऑल दैट रिलेटेड स्टफ. इसके साथ AI इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल कैमरा, विजनरी कैमरा. सो ये सारी चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. तो टुडे एट द एंड ऑफ द मीट, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वेबिनार, वेयर यू आर गोना नो अबाउट कि हाँ हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस एक फील्ड में है. Yeah, wait, we can go forward. Yeah. So first, let's start. What is MakerNova? MakerNova is a 6-week long event. Okay, the event will be conducted in both online and offline mode, exclusively for you second year students. हाँ, इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है. ऑफलाइन होता तो हम लोग ज्यादा अच्छे से बॉन्ड करते, सब कुछ करते, फिर आपने ऑनलाइन पोर्शन क्यों रखा है इसके अंदर. तो देखो, आई विल एक्सप्लेन यू दैट व्हेन यू आर वर्किंग ओवर अ प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर असाइंड विद एन XYZ प्रोजेक्ट, अब उसके अंदर ऐसा है कि यार तुम्हें मतलब उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एंड यू आर मीटिंग ऑफलाइन, देन यू कांट एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. उसकी जगह पे ही ऐसा है कि ऑनलाइन वाले में यू विल बी डूइंग ऑल द रिसर्च पार्ट, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जहाँ पे तुम लोग नए नए सॉफ्टवेयर से एक इंट्रोडक्शन लोगे कि हाँ यार हाउ Arduino IDE वर्क, हाउ द AutoCAD वर्क्स, एंड हाउ यू कैन इन फील्ड ऑफ AI हाउ क्या बोलते हैं VS कोड वर्क्स. ओके, तो उन सब का एक ब्रीफ तुमको ऑनलाइन में दे दिया जाएगा, है ना. Once that brief is completed, you will get some of the information about the idea, you will get the ideation that how you will gonna proceed in the project. ओके okay? अब वो जो आइडिएशन है वो तुम अपने जूनियर्स के, अपने बैचमेट्स के साथ या फिर अपने टीममेट्स के साथ डिस्कस करोगे कि हाँ यार मेरे पास ये आइडिएशन है इन द ऑफलाइन मीट. Okay, with that I'll tell you that the interview rounds will also be there. Okay, before for the selection of this MakerNova also we are going to take some interview of the juniors. जो जूनियर उसके अंदर अपना बेस्ट देगा या फिर दे हैव अ नॉलेज अबाउट इट. एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है तो तुम लोग यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दृष्टि. ओके, यू नीड सम ऑफ द टेक्निकल स्किल्स फॉर इट, बट ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे पास जीरो स्किल्स है या सब चीजें. इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन गाइस. तुम्हारा डेडिकेशन कितना ज्यादा है. अगर हमको लगा बीइंग एज अ सीनियर वी फील लाइक दैट यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, देन इट्स रियली गुड, यू विल बी अ पार्ट ऑफ MakerNova. ओके, सो कोई भी ऐसे मत सोचना कि यार मैंने कुछ ऐसा फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा स्किल्स करी नहीं है तो मैं टेक्निकल साइड उतना नहीं जा पाऊंगा. इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द टीम. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, अगर तुम थोड़ा सा भी डेविएट होते हो अपने डेडिकेशन से तो पूरी टीम को वो चीज अफेक्ट करेगी. ओके, सो वेयर वी कैन गो फॉरवर्ड विद दैट. नेक्स्ट स्लाइड.
Yeah. So why should you be a part of MakerNova? Okay, सबसे पहला point तो मैंने तुमको बताया है that this is the last chance to take you forward as a part of a दृष्टि member. Okay. Second चीज जो है वो ये है कि MakerNova के अंदर जो projects decide हुए ना as we go to the throughout the meet, तुम लोग देखोगे कि जितने भी projects हम लोगों ने decide किए हैं that were not just like कि हम लोगों ने कोई दो तीन projects उठाए और उसको तुम लोगों को दे दिया. वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब हमारे सीनियर्स, उनके सीनियर्स एंड हमारे सबके एक्सपीरियंस के थ्रू आए हैं. दैट फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव सीन द ट्रेंड. फॉर एग्जांपल रेस्पबेरी पाई ज्यादा यूज आ रहा है, आर्डिनो आईडी, आर्डिनो ऊनो से ज्यादा, तो वी हैव इंट्रोड्यूस रेस्पबेरी पाई देयर. ओके, तो जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है दे आर सच लाइक दैट यू गेट अ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. फॉर एग्जांपल अगर तुम लोग लोअर कंट्रोल पे काम करना चाह रहे हो तो वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट कि तुम्हें प्लानिटरी मोटर के साथ डिफरेंट व्हील्स, फॉर एग्जांपल ओमनी व्हील्स, मैकेनम व्हील्स, ये सब आगे आएगा, है ना. तो तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से तुम्हें क्लियर हो उसके बारे में. ओके, सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट. जस्ट वेट वेट. हाँ, तो इसके अंदर एक और चीज है कि तुम्हारा टीम डेडिकेशन भी देखा जाएगा. दैट हाउ मच यू आर वर्किंग इन अ टीम. ओके, जस्ट अ सेकंड. That how much you are working in a team, being a part of, if you are a part of MakerNova, then don't think that you are a part of a Drishti. Okay, Drishti club. For being a part of Drishti club, MakerNova में तुम्हारी overall performance देखी जाएगी कि how good you are coordinating with your teammates, how good you are there with your batch, and how responsible are you towards the project. Okay, with that, we have another thing is that why which make MakerNova something special is that you will get a dedicated mentor for this. Okay, there are some mentors which will be decided for a particular group, and where, for example, if there is some XYZ project and I'll be mentoring for that project, so I'll be sharing my experience towards that project and I'll be helping you out towards the problem. For example, ESP में data load नहीं हो रहा, bootloader mode में चला गया, so I'll help you out that how you can just get out of those problems. Okay, so yes, we can go forward. So guys, now be focused, be ready. We'll be starting with the civil part and I'll handing over it to Ved. Just try to note it down so that you can get every information about the project. Yeah, Ved. Hello guys. जैसा कि दिव्यवर्धन ने बताया, there are basically a few domains in MakerNova, and one of them is civil. And civil में we have two projects this year. The first one is bridge building and analysis. Uh, इस project में first of all you will design a bridge using AutoCAD, and then उसके अलग-अलग टेस्ट होते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट हो गया, लोड टेस्ट हो गया, दैट विल बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्टैट प्रो. Previously ये project was quite different. Stat pro में testing and everything was not there. So considering the changes in the industry, we've added this as well. Moving on to the next project, it is designing an analysis of a public building. As you all know, there are two types of buildings, public and residential. Previously, residential buildings के design and analysis थी, but this year we shifted it to public building. We haven't yet decided कि कौन सी type की building होगी. It could be a hospital or something else, but it will be designing of a G+1 building using AutoCAD, and again, stress analysis, load analysis using StatPro. Yes, I would like to move on to mechanical. Vasuman. Wait, you can just go Oh, forward with that. Yeah. chemical. Yeah. So chemical part. So just a second. Yeah. So for the chemical part, thank you, Ved, for sharing about this civil branch. For chemical part, I would like Prince to go forward with that. And please give a brief description about some of the chemical projects which we are going to do this time. Okay, thank you. So I will like to give you in brief detail about the chemical part. So here in this time we will do three projects mainly. The first one is production of dimethyl ether. Second is ethyl chloride, and third is the production of nitric oxide. So we will do these all three projects on a software called Explain Plus.
if you are from the chemical related field, then you will definitely know about the Aspen Plus software. It is a software used in the industrial to generalize or to maintain the chemical reactions and to see whether the chemical reaction is visible or not visible. So in Aspen Plus, we have different kind of equipments like reactor, heat exchanger, pump, valve. Every in detail equipment is being in the Aspen Plus software. So we will put on these three projects on the Aspen Plus software, and we will perform a simulation. And to be precise, we will not only focused on the only on the software part. Like there is a some little suspense that we will be doing a real life based project based on real life application, and this will be common to all. It is not like if you are from the first project like dimethyl ether, then you cannot perform other that project. So it is very clear that we will perform that real life application based project, and the name of the problem statement will not be revealed yet. It will be a suspense for you all. So Aspen Plus software is there, and further along there is a DWSM software. We will also be focusing on the DWSM software as well. We will give you a brief description, and we will run 3-4 simulation on the DWSM software as well. So there's nothing like that. We will only focus on the Aspen Plus software. And further along that, before moving into the software part, we will give you a brief detailed research part on the equipment that are being used in the chemical process simulation, like reactors, heat exchanger. As I have discussed earlier, that equipment will be discussed briefly before jumping into the software. Yes, this will be the chemical part production. So you all these three projects, dimethyl ether, nitric oxide, and ethyl chloride. This is nothing like that. If you will come into the MakerNova part, you will do all three projects. You will become only single project, and you will work on that, and that one common project will be shared to all. Our next, you can see that the next two projects are the ethyl chloride and the nitric oxide. So to be precise, hope so everyone will participate. Not everyone, but those who are interested in the chemical field, I hope we will see you in the MakerNova. Yes, thank you. Hello guys. So hopefully am I audible? Thank you Prince for sharing about the chemical projects. Okay. So अच्छा मैं एक चीज और clarify करना चाहूंगा कि if you are thinking that being a part of chemical only you participate in chemical team only and being a part of mechanical you participate in mechanical only, it's not like that. You can be a part of different teams also. अभी भी in working condition also दृष्टि में बहुत सारे ऐसे seniors हैं that they have a different domain in their bachelor's of degree in their bachelor degree and they are working over the different domain. Okay, so it's all about your interest. For the mechanical, okay, now as we all know that when we are going for a bot, it's really important कि हम लोग उसके infrastructure designing के ऊपर काम करें. So for that I would like to invite Vasu for that. Yeah, handing over to you Vasu. Am I audible? Yeah. Hello, Yeah. Vivardhan. मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, Vasu, you're audible. Just a thing that guys, if you're facing a error of the double voice now, so it was due to when we are changing the OBS. So you can just once refresh your stream and you'll get it correct. Okay, handing over to you, Vasu. Okay. Hello everyone. So I'll be discussing the mechanical projects with you. So firstly, as you can see on the screen, climbing bot. So I have displayed the pictures also. You have to design and build a bot, and the dimensions are given to you, and you need to be very precise for the dimensions. I'm repeating it again. मतलब अगर तुम्हारे dimensions exceed करते हैं with the restricted dimensions, तुम्हारा project reject भी हो सकता है. So you need to be precise about dimensions. हर project में तुम्हें dimensions दी जाएंगी कि कितने dimensions में तुम्हारा bot होना चाहिए. तो वही है, तुम्हें climbing bot दो मैकेनिज्म्स मैंने फोटो में शो करे थे. एक में या तो तुम लाइक जो टैंक का मैकेनिज्म होता है कि एक बेल्ट होती है जिससे वो फ्रिक्शन की मदद से ऊपर जाता है. सेकेंडली तुम एक स्टेप स्टेप के साथ तुम गियर्स लगा के और व्हील्स के साथ में यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू climb how you can make the bot climb the stairs. सेकंड में जंपिंग बॉट में
ये जो सेकंड पिक्चर है इसमें एज अ ग्रास हॉपर का इन्होंने रेफरेंस लिया है। तो इसमें एंड उसके पहले वाली जो पिक्चर है उसमें प्रोजेक्टाइल के ग्राफ्स दिखाए हुए हैं कि मतलब कैसे कितने एंगल पे तुम्हें जो तुम्हारा बॉट होगा उसको जंप करवाना है, कितने पे एक्सेलरेट करवाना है और कितनी उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए एंड व्हाट वुड यू यूज टू एक्सेलरेट और प्रोड्यूस वेलोसिटी एट द इनिशियल स्टेज। मतलब तुम्हें स्प्रिंग लगाने हैं या तुम्हें कुछ ऐसा मैकेनिज्म सोचना है या तुम्हें 4 बार लगाना है या तुम्हें कुछ क्या कुछ भी करना है, तुम्हें बस सोचना है कि इसको कैसे इनिशियली कितनी वेलोसिटी दे सकें। और इसमें भी अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो इट इज गिवन दैट इस पे मिनिमम 500 ग्राम का पेलोड होना चाहिए। मतलब आधा किलो का इसमें कुछ तो लेके जाना है। उसमें थोड़ा बहुत एरर चलेगा बट बहुत ज़्यादा हुआ तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड 1 मिनट। या तो मैं कह रहा था कि जंपिंग बॉट में तो मैंने दिखा रखा है कि यू कुड, तो देखो तुम्हें बेसिकली मोस्टली हर प्रोजेक्ट में जिसमें तुम्हें बॉट बनाना है और तुम्हें किसी पेलोड को उठवाना है या तुम्हें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाना है कुछ करना है तो एक ही कॉन्सेप्ट हमारा बेसिकली उसमें लगेगा, दैट इज वेरी बेसिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब तुम्हें इनिशियली उस पे या तो तुम कुछ स्प्रिंग लगा सकते हो या तुम कुछ ऐसा फ्लैप लगा के नहीं कन्वर्ट हो, डैम्पिंग फैक्टर आएगा, बहुत सी चीजें आएंगी। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी डायमेंशंस जो भी पेलोड लिखा है यू नीड टू बी प्रिसाइज अबाउट दैट। आई एम सेइंग इट अगेन, these were about climbing bot and jumping bot. Okay, read next slide please.